Hello kids, welcome to maths class and today we'll do simple linear equations. So the concept we are going to cover in this chapters are trial and error method for solving an equation, systematic method for solving an equation, transportation method for solving an equation and the practical application of linear equation. Linear equations are used to solve the many practical problems. Let a cab company charges rupees 30 for the first kilometer, then rupees 10 for every kilometer. First kilometer के 30 rupees, then 10 rupees for every next जो जितने भी किलोमीटर उसके उनके लिए. How much money will the person pay who cover the x kilometer distance? तो total जो हो जाएगा 30 plus x minus 1 into 10. So that is equals to rupees 10x plus 20. Start करते हैं introduction से. In the previous class, we have learned about the linear equation. Let us revise it in brief. Equation. Equation is a mathematical statement which consists one or more variable and state that the two expressions are equal is called the equation. The expression on the left hand side is equal to the sign that is called जो left hand side पे होगा उसको हम LHS बोलते हैं. The expression on the right hand side of the equal sign that is known as right hand side or RHS, like 7x plus 5 equals to 8. So 7x plus 5 जो है equal के left hand side पे वो LHS हो जाएंगे and 8 is RHS. When the highest power variable of an equation is 1 तो वो कहलाती है linear equation. Highest power variable of an equation is called the degree of equation. उसको हम degree of equation भी कहते हैं highest power को. We may compare the equation with the balance if two equal things or weights are put in the two pens, then two pens remain the balance. अगर दोनों side weight same है तो वो कैसे रहेंगे? Balance रहेंगे. In figure A does not represent the equation because क्या है? एक side में pen ऊपर है, एक side में नीचे है. Means they are not balanced. In figure B, the pen are balanced. So that shows that represent the equation because two pens are balanced. If we take away anything from the one side, we must take away the same quantity from the other side. Also similarly, if we add something to the one side, we must add the same quantity to the other side to balance the equation. Means अगर हमने एक साइड से अगर कोई चीज़ निकाली है तो वी हैव टू टेक द सेम क्वांटिटी फ्रॉम द अदर साइड. अगर एक साइड ऐड कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी हमें दूसरी साइड ऐड करनी पड़ेगी टू कीप द बैलेंस. टू स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ पेन्स, सो पेन्स रिमेन बैलेंस. रूल्स टू बैलेंसिंग लीनियर इक्वेशन. देयर आर 4 रूल्स फॉर बैलेंसिंग लीनियर इक्वेशन. Rule number 1, the same number can be added to both the side of equation. The same number can be subtracted from the both side of equation. Both side of an equation can be multiplied by the same number and both side of equation can be divided by the same non-zero number. Next is solution or the root of an equation. So solution or root of equation क्या होता है? The value of the variable which satisfy the left hand side and RHS, that is right hand side, and is an equation. Means दोनों sides equal हो. That is called the solution or root of equation. Solution of a linear equation. There are 3 methods to solving the linear equation. First is trial and error method, that is. Next is systematic method and third is transportation method. First हम देखते हैं trial and error method. In this method, we substitute different value of the variable in the equation so that both sides make an equation equal. The value of that satisfy both the equation, that is called the solution of the equation. Like हमें यहाँ पे solve करना है 3x minus 5 equals to 7 by the trial and error method. Now we have to find a value of x so that जो left hand side and right side दोनों equal हो. So हम क्या करेंगे? अलग अलग numbers रख के try करेंगे. So that's why it's called trial and error method. So first we'll take x as a 1. Now we'll solve the left hand side. It gives minus 2 and our right hand side was 7. So that means that is not the equation. Clear? Now we'll take x as 2 value रख के देखेंगे. That is not equals to the right hand side. Now we'll put the value 3 इस तरीके से रखेंगे. Then we'll put the value 4. So when we put the value 4, we will get that is equals to जो हमारी left hand side है that is equals to 7 and that is our right hand side. That means it is the
solution for the equation, we can say from the above table x equals to 4, that gives you left hand side equals to right hand side. Next is systematic method. Sometime trial and error method become lengthy because हमें ट्राई करते रहना पड़ता है कि कौन सा नंबर सही होगा, which number will give us equation. So that's become very lengthy. So what we do? We use systematic method to find the solution of the equation. Like, so we have to solve 8y plus 5 that is equals to 37 by systematic method. So 8y plus 5 that is equals to 37. Now we have to eliminate because हमें variable की value find करनी है, तो यहाँ से 5 को eliminate करना है. So what we'll do? To eliminate 5, we will subtract 5 from the left hand side. तो same हमें 5 क्या करना है पड़ेगा, right hand side से भी subtract करना पड़ेगा. So that is equals to 8y plus 5 minus 5, 37 minus 5. So 8y plus 0 equals to 32. 8y equals to 32 हो जाएगा. And now we have to eliminate 8 because हमें y की value find out करनी है, तो हम 8 से divide कर देंगे. So y equals to हो जाएगा 8 से 8 कट हो जाएगा, y equals to 32 upon 8 that is equals to 4. Next method is transportation method. In this method, we keep variable on the one side and the constant on the other side. इस method में हम क्या करते हैं, variable को एक side रखेंगे and constant को दूसरी side रखेंगे. By transporting number, we change the sign of the number when we transpose any number from one side to another. अगर एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा कोई भी नंबर, तो उसकी जो उसके आगे साइन है वो चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं. सॉल्व 5y minus 8 equals to 22 by transportation method. So we have to solve 5y minus 8 equals to 22 by transportation method. 5y minus 8 equals to 22 है. Now what we'll do? हम वेरिएबल को एक साथ रख रहे हैं, कांस्टेंट को एक साइड. तो कांस्टेंट यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 8 है, तो हम 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो 5y इक्वल्स टू 22 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 30. क्लियर. नाउ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y के साथ 5 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो साइड जब चेंज होगी तो वो डिवाइड में चला जाएगा. सो y इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 6. सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन टाइम 8.1. फ्रॉम द इक्वेशन form the equation for each of the following statement. A number increased by 4 is equal to 8. Suppose that number is x. So increase by 4 यानी x plus 4 that is equals to 8. Clear? Next is check whether the given value in the bracket is the solution for the given equation or not. So x plus 6 equals to 3. x equals to 3 है, तो अगर हम x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 3 प्लस 6 9 हो जाएगा. दैट मीन्स दैट इज नॉट करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड. सो x माइनस 6 इक्वल्स टू 10 है. x माइनस 6 इक्वल्स टू 10. दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आर राइट हैंड साइड. सो विल टेक x एज अ 1 minus 6 that is equals to minus 5. That means that's not the solution. Clear. Now we will put another value. हम ऐसे करेंगे, x की जगह 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे. We have to find x की वैल्यू में क्या फाइंड करनी है 10. Now we know कि ये यहाँ पे माइनस 6 है, x माइनस 6 है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है दैट इज पॉजिटिव. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 16 रखेंगे. सो x इक्वल्स टू 16. That is the solution for this equation. Next, solve the following equation using the systematic method. 3x minus 2 equals to 7. So, what we'll do? First, we have to remove this variable from here. Minus 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे plus 2 ऐड कर देंगे. And same thing हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा. क्लियर. सो ये तो हो जाएगा कैंसिल. 3x इक्वल्स टू 9. x इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3. क्लियर. नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन मेथड. सो नाउ वी हैव टू यूज द ट्रांसपोर्टेशन मेथड. 7x plus 3 equals to 17.
7x प्लस 3 इक्वल्स टू 17. सो 7x इक्वल्स टू हो जाएगा 17 माइनस 3. 7x इक्वल्स टू हो जाएगा 14. So x equals to 14 upon 7, that is equals to 2. Clear? Next, more simple linear equation based on the transportation method. Example लेते हैं, solve 6x minus 12 equals to 3x plus 8. Now, हमारा expression है 6x minus 12, that is equals to 3x plus 8. So 6x minus 3x, हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड कर दिया, कांस्टेंट को हम एक साइड कर देंगे, 8 प्लस 12. सो x की वैल्यू निकालेंगे 20 अपॉन 3. क्लियर? Practice all the examples. Next is evolution time 8.2. Solve the following linear equation. 5x minus 5 equals to 2x minus 10. So, हमारी इक्वेशन है 5x minus 5 equals to 2x minus 10. So, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे, वेरिएबल को एक साइड कर देंगे. So, ये हो जाएगा 5x, इसकी प्लेस चेंज होगी, ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे -10. -5 इस साइड आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +5. So that is equals to 5x minus 2x, that is equals to 3x, and 10 minus 5, that is equals to -5. So x equals to हो जाएगा -5 upon 3. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ हम लीनियर इक्वेशन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है वो समझेंगे. समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व द पजल क्वेश्चन, सो वी कन्वर्ट दैम इनटू द सिंपल इक्वेशन एंड सॉल्व इट. एग्जाम्पल से लेते हैं. द सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 6 इज इक्वल टू 31. फाइंड द नंबर. द सम ऑफ द 5 टाइम नंबर, सपोज दैट नंबर इज x, उसका 5 टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज 5x. नाउ the sum of the 5 times of a number and 6. So 5x plus 6, that is equals to 31. This is according to the question. Now we have to find the value of x. So 5x equals to हो जाएगा 31 and 6 साइड चले जाएगा -6. So 5x equals to हो जाएगा 25. x equals to 25 upon 5, that is 5. ये हमारा आंसर आ जाएगा. Next is evolution time 8.3. 6 added to twice a number gives 18. Find the number. Suppose that number, let the number be x. Now 6 is added to twice of number. Twice of the number is 2x plus 6. Clear? 6 is added twice a number gives 18. That is equals to 18. So 2x equals to 18 minus 6. 2x equals to 12. So x equals to हो जाएगा 12 upon 2. So x equals to हो जाएगा 12 upon 2, that is 6. So that number is 6. Practice all the questions. Next is look back. A mathematical statement which consists one or more variables and the state that two expressions are equal is called the equation. If the highest power of the variable or the degree in the equation is 1, that is called the linear equation. The value of variable which satisfies the left hand side and RHS, yani right hand side of an equation, that is called the solution or the root equation. The same number can be added to both sides of an equation. The same number can be subtracted from the both sides of equation. Both sides of equation can be multiplied by the same number. Both sides of equation can be divided by the same non-zero number. Transportation means change the sign of the term while taking from one side to another. Next is, let's recall. So practice all the questions given here. Next is mental zone. An equation has two sides, LHS and RHS, left hand side and right hand side. Next is multiple choice questions. Take the correct option.
If 4x minus 4 equals to 8, find the value of x. So 4x equals to हो जाएगा 8 plus 4. So x equals to हो जाएगा 3. So A is the correct option here. Here we end the chapter. I hope chapter आपको समझ में आ गया. Now to practice it.